So now we are moving to our next session, and the topic is creative economy and the growth of tech economy. I would like to invite Imran Jatawala, Project Director NICAD, to moderate this session. And for the participants of this session is Hira Zainab, VP Contour Software, Dr. Sahibzada Ali Mahmood, CIO NetSol, and we have Azhar Nawaz Sahab, CIO Engro, and Mehzad Seher, Cisco Engro Corporation. CISO, sorry, Engro Corporation. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। लंच के बाद वाला ये पहला फॉर्मल सेशन है, तो हम आपको कोशिश करेंगे थोड़ी सी जगाने की। स्टे विद अस एंड हम कोशिश करेंगे सेशन को इंटरेक्टिव भी रखें। आई एम इमरान जताला, आई एम प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़। ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट बिल्डिंग पे लोकेटेड ये इनिशिएटिव है, एंड आवर पर्पस इज़ कि हम प्राइवेट सेक्टर में एरोस्पेस इंडस्ट्री को और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करें। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्रिएटिव इकोनॉमी एंड टेक इकोनॉमी। उसके लिए वी हैव एन एस्टीम्ड पैनल जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिएटिव इकोनॉमी में और टेक इकोनॉमी की ग्रोथ में किस तरह से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया तीनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए। वी डिड ए प्रोजेक्ट विद ब्रिटिश काउंसिल, और आज से 4-5 साल पहले तो आई लर्न कि क्रिएटिव इकोनॉमी कितनी बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ग्लोबली क्रिएटिव इकोनॉमी इज़ ओवर $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। सिर्फ यूएस के अंदर, विच इज़ नोन प्राइमरीली फॉर टेक इकोनॉमी, अराउंड $900 बिलियन की क्रिएटिव इकोनॉमी है। यूके के अंदर इट्स ओवर 100 बिलियन पाउंड्स इकोनॉमी। So creative economy is not just performing arts, it goes into ICT, it goes into gaming, it goes into advertisement, it goes into media, और बहुत diverse verticals cover होते हैं creative economy के अंदर। और पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा segment हम build कर सकते हैं economy का in creative economy। So हम शुरू करेंगे हिरा आपसे, because you have been working with Pasha as well and you are now VP Contour. So आप काइंडली इस पे पाकिस्तान में क्रिएटिव इकोनॉमी का क्या लैंडस्केप है और इसमें क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? So thank you, Imran, for setting the stage. As we all know, IT industry has been fastest growing sector, but if we look at the IT industry की overall landscape, it started from call centers back in the day in 1990s, then evolved into service companies, and currently अगर हम इस वक्त IT exports पे देखें, IT companies को देखें, which is 10,000 companies, a huge majority of them are service based, and only in the past decades we have seen evolution in product companies, and now there is 80% companies which are doing both services and products, and then we are now seeing integration with other sectors and other verticals. Some verticals are more common than the others, specifically with SDGs, health tech, ed tech, to name agri-tech की हम बात कर रहे थे, to name a few. These verticals are big, fintech, very fastest rising vertical in Pakistan. So काफ़ी सारे verticals हैं, but there is still a big opportunity that exists when we talk about creative economy, और उसमें specifically culture and heritage के साथ integration में। एंड उसमें अगर हम देखते हैं तो इस वक्त वाहिद वर्टिकल दैट हैज़ बीन रियली एक्टिव एंड दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमी, दैट इज़ एनिमेशंस। सो वी हैव पाकिस्तान companies have great, we have an excellent success story of Quixel being acquired by Epic Games, which is one of the big giants. So we have animations में good success stories, but still integration with our culture, heritage and उसको creative economy के साथ link करने में we have a long way to go, be it in terms of AR, VR, be it in terms of preservation of culture, in terms of technology, be it in terms of gamification. That element still needs to be tapped.
We have, however, made progress when it comes to e-commerce. So in the past 3 years, we have seen, 3 to 5 years, we have seen significant progress in making our products being available on, international platforms. And वहाँ से e-commerce से हमारी काफ़ी सारी products available हुई हैं. लेकिन still overall integration में there is opportunity that needs to be unleashed. Thank you very much, Hira. Pakistan has a rich cultural heritage. अगर आप मेहरगढ़ बलूचिस्तान को देखें तो that's 7000 BC. That's a 9000 years old civilization. That's the oldest civilization in the world. दुनिया में कोई उसके करीब भी है करीब भी नहीं है टाइमलाइन पे. बाइबलोन की बात करते हैं, इजिप्शियन की बात करें, किसी भी सिविलाइजेशन की, दे आर नॉट ओल्डर देन 5000 BC. तो हमारे पास बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेहरगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, तो हमारे पास वो कल्चरल हेरिटेज है जिन पे क्रिएटिव इंडस्ट्री और आईसीटी को अगर हम मर्ज करें तो वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड. और उसमें अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें, जिस तरह हीरा ने कहा कि यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री, मैं जल्दी से जंप नहीं करना चाह रहा था गेमिंग इंडस्ट्री पे, बट समहाउ गेमिंग एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ इज़ ऑफिशियली $300 million इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड अनऑफिशियली अराउंड $500 million. पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स $2.5 billion हैं. And so gaming and animation already is 20% of Pakistan's IT industry. So that's just one part of creative economy. और अगर हम कंटेंट प्रोडक्शन में चले जाएं तो वो एक और पूरा नया वर्टिकल है जो कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का एवेन्यू खोल सकता है. सर, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट गेस्ट, साहिबजादा अली महमूद. आप एमडी रहे हैं केपीआईटी बोर्ड के एंड नाउ यू आर सीआईओ एट नेटसोल टेक्नोलॉजीज़. सर, आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से एंड नाउ विद योर न्यू पोर्टफोलियो, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड टेक इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट सेक्टर किस तरह से क्या काम कर रहा है और क्या चैलेंजेस हैं? थैंक यू इमरान. देखिए, इन माई प्रीवियस रोल आई वाज वर्किंग फॉर द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक enabling environment in which different actors working in different sectors of the economy, they can thrive. When working for the government, you realize that in a situation while we are scrounging for forex reserves, it becomes important that we target the right areas where we can make an impact and we can improve our exports, increase them substantially. So while I was in my previous role, we took certain initiatives. अभी बात हो रही थी game development की. I'll give you few examples. Game development में, as you rightly mentioned, it's a growing area where a lot of interest is taking place. आपने अभी recently देखा होगा in the last few years, a few players from Pakistan, they made an impact in the gaming industry. Actually, they created some new records, Arsalan Siddiq being one of them. And that basically stirred a lot of interest among other people to look at this particular area. अब जो गेमिंग इंडस्ट्री है, it's growing throughout the world. There is a lot of potential in it. लेकिन जब आप गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं, unfortunately when we look around us, we need a lot more than we currently have. And the quality of game developers that we have, you see, it's not just the game development, it's the whole ecosystem. How you can support the whole ecosystem. उसमें, for example, अगर एक game developer है, how does he access these different 3D assets, ठीक है, which then he can use to develop a game. So to address that, what we did was to start off with, we started upskilling people in this area and we launched different programs. The good thing was कि हमने एक अपना पहला upskilling program जब launch किया था game design और animation में. So by the time the program was halfway there, all of the participants, they started receiving job offers and all of them were employed. So there was 100% employment rate. किसी भी और skill में हमें इस तरह का result देखने को नहीं मिला. And all of them were employed readily because there is a lot of demand. But on the supply end, we have a problem, a big problem. And it's generally true for other sectors of the creative economy as well. You see, we have talented people, लेकिन मिसिंग लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, दे प्रोड्यूस वेरी गुड हैंडीक्राफ्ट्स. सो व्हाट वी डिड वाज के
KP में एक है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देखता है. So they reached out to us and they said that we have very talented people वो मुख्तलिफ handicrafts बनाते हैं but they don't have a platform. उसमें ख़वातीन भी हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं but they don't have any awareness. अगर वो डिजिटल मार्केटिंग से related awareness है या उसके अलावा they don't know how to market their products and they are really good quality products. So we developed an e-commerce platform for them and they're still using it. उसमें digital payment से लेकर everything is available. It's a fully functional digital platform. So on part of the government, all you can do is to create an enabling environment जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं who are a part or who can contribute towards the economy, उनको आप एक inclusive approach से you take them on board, help them out and give them opportunities so that they can thrive and contribute to the economy. NetSol की आपने बात की, it's just been hardly 3 months, so I'm still looking at different areas. It's mainly heading the global professional services portfolio, so that is a little bit different than our discussion right here, but that is why I gave you examples from my previous position. देखें opportunities बहुत ज़्यादा हैं. We usually talk very we look at things from a very skeptical perspective. लेकिन you see recently with the generative AI related phenomena, content creators जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं all of a sudden. But then the problem is with so many content creators on the supply end, again there is a problem of quality content because if you start using generative AI, you have to use it very responsibly. लेकिन अभी हिरा जिस तरह बात कर रही थी, we have a very rich culture, we can make the most out of it. देखें हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, हम अगर वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस, रिलीजियस टूरिज़म की बात करें, वर्चुअल टूरिज़म की बात करें, वी कैन क्रिएट दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. बुद्धिस्ट साइट्स हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में. आई विल गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल. 520 मिलियन बुद्धिस्ट हैं पूरी दुनिया में, ठीक है. आप उनके लिए एक इमर्सिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेसिस पे. अगर 10% भी उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ 52 मिलियन बुद्धिस्ट, राइट. अगर वो रिलीजन, सो यू सी, यू जस्ट थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर यू कैन मेक यूज़ ऑफ सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट दैम इनटू इकोनॉमिक वैल्यू with AI accelerating at such a pace. The only limit is your imagination how you can make it work. मैं अभी आज सुबह एक आर्टिकल देख रहा था कि in the city of New York, they are going to use AI to get hold of all those people who are not paying proper tax, ताकि tax में उनको लेंगे. And that can be something we can do in Pakistan also if the will is there. So these are a few things that I thought I'll contribute. थैंक यू वेरी मच. मेरी कॉलीग GSMA से भी यहाँ हम बैठे बात कर रहे थे कि इनके डायरेक्टर एक इंटरनेशनल पहली दफ़ा पाकिस्तान में विज़िट कर रहे थे, फिलिप उनका नाम है, कुछ दिन पहले. एंड ही वाज सुपर स्केर्ड जब वो पाकिस्तान आ रहे थे. दिस वाज हिज फर्स्ट विज़िट टू पाकिस्तान. सो समहाउ जो नैरेटिव मीडिया ने पाकिस्तान का पेंट किया है ग्लोबली, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है. और वो मैं समझता हूँ क्रिएटिव इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले कर सकती है. हमारे पास 3 मिलियन से ज़्यादा फ्री लांसर्स हैं पाकिस्तान में, थैंक्स टू इग्नाइट, KPITB, PITB. इन्हीं 3 इदारों ने इन सारे फ्री लांसर्स को ट्रेन किया है. समहाउ जो फ्री लांसर्स भी जो लो वैल्यू स्किल्स पे काम कर रहे हैं, एक तो वो कम पैसे कमाते हैं, दूसरा जनरेटिव AI से सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड ये लोग हैं. सो हमें उनको रीस्किल करने की ज़रूरत है, उन्हें अपस्किल करने की ज़रूरत है. और क्रिएटिव इकॉनमी के अंदर जो स्किल्स हैं वो जनरेटिव AI से थोड़ी देर में रिप्लेस होंगे. सो वहाँ पे हमारे पास लीज टाइम ज़्यादा है. सो हम ये इस प्लेटफॉर्म से यही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम एक नैरेटिव भी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन कर सकते हैं थ्रू क्रिएटिव इकॉनमी, और एक बहुत बड़ा बिजनेस केस भी बनता है इसके साथ. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, मिस्टर मेजाज सहर. सर, किस तरह से आप देखते हैं इतनी बड़ी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ इतना जो हमारे पास बड़ा यूथ बंच है, उसको अगर हम बेहतर ट्रेन करें और इस इतनी बड़ी एक ग्लोबल बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और एक नेशनल नैरेटिव, इसके अंदर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? Thank you. So, unfortunately, I have seen that academia, there is not right affiliation with the institutions, where before people are being actually
freed from their 4th year, they should be getting some opportunity to have some hands-on experience. Only in some of the industry, like in medical industry, we have a concept of house job, right? So no doctor can go and do practice practically unless he spend at least 1 year. And I am basically engineer, and I remember once I was being graduated from UET Lahore, I was looking for this opportunity, and the time till now is like we need to back somewhere to get internship. So there is no, even on the governmental level, this thing is not institutionalized. And that actually is the, I will say, the root cause of many issues, especially for our younger generation, because once they reach the market, they don't have hands-on experience. They don't have proper grooming, especially if we are trying to send them outside Pakistan. We have big slogans, we have big numbers to achieve, and we have high expectation from younger generation. But frankly speaking, how many technical institutes, especially in Pakistan, they are giving lectures about how to talk in a public place, how to talk with your boss, how to even sit properly. And in other side of the world, this is part of the curriculum. So in addition to technical education, if we really want to export our resources as a export resource, it's a complete package. And that package, unfortunately, is still missing. It's required a lot of improvement. And through that, we will be able to sell this. The potential is humongous, no doubt. Our young generation, I know personally one guy I hired once I was in EVP PTCL for national cyber security. The guy at the age of just 18 years, he wrote a book on cyber security, and that was published by Oxford Press, London. And so we just hired him like 10 years back. We were able to even pay him like 1 lakh, 2 lakh per month. So it all depends upon our potential, which is, if we really go and utilize this, I usually say it is a high octane oil, It can go into wrong direction, it can go into right direction. It's all up to us as a producer, as an executor, to execute them in a very productive way. So a proper strategy is required to actually satisfy this generation, especially the young generation. Otherwise, sadly speaking, this enough brain drainage is happening, and the responsible, people are almost quiet, and we take this in a different direction, like, okay, they will give us more remittance. But this young generation, I give you another example. I know one startup in Pakistan, just the average age of their all, even CEO and COO is like 28, 29 years old, and they have more than 400 employees as of today. And what they are doing in the name of creative work, once you retire, especially if you have done a great job, in some of your area, like in sports or in entertainment, especially in outside Pakistan, it is a dream for people to write a autobiographic book. So not everyone could be a good writer. I was surprised. They have brilliant content writer who actually listen to all these big names and then create their illusions, their all journey into a very creative writing. It's called ebooks, and they really charge heavily in dollars, and the customer is very happy because for them it is like their dream which come true through our Pakistani content writer, and then they pay them in millions of dollars. Of course, it is a win-win situation for us to get something in dollar, and for them also. And then it becomes a word of mouth. It travels. So if you satisfy one celebrity, he will actually introduce you to another group of 10 people. They come and also become your customers. Last but not the least, especially to this talk, in Pakistan, creative mind, even in cybersecurity perspective, we were the pioneer of introducing the first ever virus in Pakistan. Not in Pakistan, in the world, called Brain. BrainNet introduced the first ever virus. So ideally speaking, Pakistan was supposed to become the hub of antivirus companies, right? But unfortunately, no matter it happened like 3 decades before,
Right now, we are just a normal user, like we simply use semantic or other antivirus solutions, but we never ever thought that we could have done more than any other typical antivirus company, being the pioneer of introducing the first ever virus. So I think it's time to rethink, and with this collaboration, we can improve further, especially with the governmental support. थैंक यू वेरी मच सर मेहजाद। मैं चाह रहा था एकेडेमिया पे हम सेकंड राउंड में आते, लेकिन आपने अच्छा किया अभी हाईलाइट किया कि हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल थीम भी यही कि मेकिंग पाकिस्तान ए टेक डेस्टिनेशन। हम अगर ऐसे रिसोर्सेज जिनको टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं, क्रिएटिव स्किल्स दे रहे हैं, जो कि ग्लोबली आउटसोर्सिंग कर सकें, काम कर सकें, दुनिया को आईटी स्किल्स एक्सपोर्ट कर सकें, उनके साथ उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है और शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सॉफ्ट स्किल्स दिए जाएं। और ये काम एकेडेमिया ने ही करना है। अगर एकेडेमिया नहीं करेगा तो इट वुड बी टू लेट। अगर बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है सॉफ्ट स्किल्स के बगैर, इट्स टू लेट एंड इट्स टू हार्ड टू फिक्स देम एंड प्रोवाइड देम विद सॉफ्ट स्किल्स। कार्नेगी मेलन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च है सर दैट 84% ऑफ योर सक्सेस is dependent on your leadership and communication skills, and just 16% is dependent on technical skills. Unfortunately हमारा एक जो एकेडेमिया सेक्टर है वो टेक्निकल स्किल्स, हार्ड स्किल्स तो दे रहा है, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत कम स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट दैट्स अ मेजर गैप कि अगर हमने ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव होना है, अपनी जगह बनानी है, सो इन हार्ड स्किल्स के साथ, इवन कोडिंग इज़ अ हार्ड स्किल, तो इन हार्ड स्किल्स के साथ हमें वो सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए कि ये लोग पॉलिश्ड हों, शाइन करें और ग्लोबली पाकिस्तान को वाकई हम एक टेक डेस्टिनेशन बना सकें। थैंक यू वेरी मच सर मेहजाद। मूविंग ऑन टू सर यू, सर अजहर नवाज, यू आर विद CIO एंग्रो। एंग्रो किस एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिजनेस ग्रुप है। आप टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को जनरली किस तरह से देखते हैं और स्पेशली उसके अंदर क्रिएटिव इकोनॉमी को सर? No, it's on? Okay, good. Thank you. Thank you, Imran, and thank you, Kamal, for giving me this opportunity. So there was some discussion around how can our creative economy help the economy, especially in terms of technology. We are in pockets. We are doing amazing, right? So we have brilliant minds. While we are increasing IT exports, it's only individual efforts. We need to look at channelizing all of this together, right? So the need is that we all of these forces come together, develop a cohesive strategy, and then target this. It's not that every day you can build a new Google or build a new Apple. All the time focusing on new ideas and new technologies and new products. I don't want to discourage that, but how many ideas will succeed? So where is the bulk of money? Where is the bulk of value? Right? So just we just need to learn how other people have done it, and just even if we just follow the suit, companies like TCS, Wipro, Accenture, Capgemini, they're all service companies. You don't have to create the next Apple product to boost your tech economy or creative economy. There are already so many problems out there, and people are solving them. If we get our share of the pie, even in those areas, even in those services, it's huge. We can continue to try and develop our own products, try and bring our own novel ideas, but let's try and piggyback. Let's work with Amazon, work with Microsoft, try and bring those latest and greatest skills into our country, and then try and provide those services which other people. India earning all of this technology revenue, most of it through services.
right? So why can't we build more net souls? Why can't we build more systems and grow them to next Wipros, right? So I think the skill is there, the talent is there, the capabilities are there. People are all working in their own silos. Somehow or the other, we need to put all of this together. A lot of people are talking about government. I don't look towards government. I think it's private sector has to come together. I think forums like this, CXO or other forums, these are the people who need to bring all of the forces together, channelize them, collaborate, and move forward. That's great point sir कि हम सारे सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं. मेरा ख्याल है इस जैसे फोरम्स को CXO फोरम हो गया, ये कॉन्फ्रेंस होगी, दिस इज़ जहाँ हमें सोल्यूशंस पे बात करनी चाहिए. और मैं इस अगले राउंड में कोई आपसे चाहूँगा, मुझे कहा गया है बहुत ख़तरनाक तरीके से कि जी जल्दी करें बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम से, कि आप क्विकली अगर 1 मिनट लें सारे स्पीकर्स और सोल्यूशन पे बात करें. देखें, हमने पाकिस्तान को एक टेक डेस्टिनेशन बनाना है. हम चाहते हैं कि नेटसोल TCS बने, उस टाटा कंसल्टिंग जैसी बड़ी कंपनी बने, इस जैसी और कंपनियां बने, ऐसी कंपनियां आएँ जो $1 बिलियन कंपनियां बने और फिर $100 बिलियन कंपनियां बने. और पाकिस्तान में इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर इस तरह से लीड ले, उसमें क्रिएटिव इकॉनमी का भी एक बड़ा मेजर शेयर हो. सो लेट्स शेयर सम सॉल्यूशंस, चाहे वो आप टैलेंट डेवलपमेंट के लिए कहें, एकेडेमिया की रिफॉर्म के लिए कहें, कोई पब्लिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस हो सकते हैं. सो आप सारे काइंडली जस्ट टेक 1 मिनट एंड शेयर सम सजेशंस. मेहजाद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं. So I think typical mindset needs to be changed as we learn from global interesting disruptive technology, like the typical technology company keep on selling more minutes, more call, sari raat call kare, and that's it. And someone came and overnight and introduced WhatsApp, and over the top, actually they are making the actual revenue, and all these technology company, you know, they were speechless, and now they are having revenue issue. The solution here, rather than complaining, is, I think in Pakistan, for these creative people, a special consideration should happen to introduce and improve their salary structure, across private sector and public sector and government. Why? Because if we will not improve this, today, it came in one of the report I was reading that Pakistan, the lowest, paid actually country, especially for freelancer and who are doing development work. And even Uganda and other countries, they are better than us. And this is a serious call. So before we claim big things, the most important thing is, if I look at my right and left after claiming a big, my resources should be standing with me. I am nothing without my resources. And these resources, to be honest, in a cruel statement, no more lip service. Money, it has its actual importance. If that is not being considered, because if you translate, the current pay scale, I really feel shame. Sometimes we are not even paying $1,000 to our highly, skilled resources. And imagine, how he's gonna work with you with full loyalty and how he's gonna give you his best. So I think foundation level thing is, before we claim anything, let's reconsider this foundation, and then I'm very confident that we can achieve, the big targets. Better packages, especially with increased cost of living, that's a must. Yes. Sir Ali, sir, आपके लिए. I do agree that, for example, अभी बात हुई कि services sector में globally there is a big opportunity, but again that is operating in a red ocean of sharks. There is a lot of competition, right? And what can set us apart while we are operating in that space is the quality of our human resource. That is a challenge that I've recently, I have been tackling it while I was in my previous position, but even now I get to experience this problem that wherever there is a resource requirement, we have to ensure that our workforce, it has the kind of skills that that sets it apart. देखें,
हम ये कर सकते हैं, what we can do is that we can operate in certain innovative spaces. देखें, innovation again is important. We can say whatever we want to, but we cannot just focus on the services area. We have to look at innovation, how we can build these different platforms, solutions through which we can create spaces for ourselves. और अभी जिस तरह मैंने बात की, with Gen AI, now we don't even have to put in that much of an effort. If we have a good idea, we can make it work quicker than ever. पहले अगर उस पर साल लगता था, अब महीने लग सकते हैं, ठीक है. और अभी एक जो बात आपने की, एक और चीज़, सॉफ्ट स्किल्स, आई एग्री. अगर किसी को भी हमने टेक्निकली अपस्किल करना है, सॉफ्ट स्किल इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी, रिगार्डलेस कि आप कौन सी स्पेशलाइज स्किल्स उनको इम्पार्ट कर रहे हैं. सॉफ्ट स्किल्स, और अब तो मैं ये कहूँगा, आई मीन यू लुक एट दीज डिफरेंट ऑनलाइन जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, मूक्स, आपको सबसे ज़्यादा कोर्सेज नज़र आएंगे AI के ऊपर. एंड देयर आर कोर्सेज, फॉर एग्जांपल Gen AI फॉर एवरीबडी. एंड आई सीरियसली बिलीव दैट अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स, अगर हम ये Gen AI से रिलेटेड स्किल्स भी सबको दे दें, सो no matter whichever capacity you're operating in, it will certainly give you a certain advantage. Thank you very much, Ali. Soft skills. Hira. Thank you, Imran. Since you talked about solutions, and the panel has creative economy and tech growth, I want to separate the two, because the solutions for two, while they are similar, but they have very unique demands of their own as well. For creative economy, let's first look at that. We talked about the potential of collaboration with AR, VR, animations, gamification, e-commerce. The biggest need and the biggest solution right now that I will propose is the integration of technology in our Department for Tourism, Department for Culture. The sooner these Ministry of Culture, Ministry of Tourism, the sooner they can integrate technology solutions in that, उतनी जल्दी उनके अपने एजेंडाज एंड ऑब्जेक्टिव्स वो भी फुलफिल होंगे, एंड उतनी जल्दी वी कैन गेट अहेड ऑन द गेम एज वेल. Ministry of IT can play a role in that, NITB can play a role in that, but inclusion of different products, and I will give an example. एक local product है कोयल. किसी ने नाम सुना है इसका? One person at least. So कोयल is, again, it's a local Pakistani solution. जिस तरह से Spotify है, think of it as a local Spotify. But it has cultural and लोक, हमारे जो different पंजाबी में, सिंधी में जो singers हैं, उनकी पूरी database और उनका पूरा उन्होंने playlist और उसका solution किया हुआ है. And thousands of singers. Because हमारे जो tier 2 cities हैं और जो towns and villages हैं, वहाँ पे English गाने कोई नहीं सुनते, उर्दू गाने नहीं सुनते, वहाँ पे वो अपने local singers को सुनते हैं. मगर उसके लिए कोई उनके पास इस तरह का कोई place नहीं था. So that's how that product came into being. Unfortunately, we do not even know about that product. So that's one is the creative economy and celebrating such products, bringing them forward, and integration with culture and tourism department. The second leg of the conversation is around tech growth. A lot has been said about it. I do not need to repeat, but for the sake of current discussion, two things that I will say. One, two critical levers. One, Ali talked about it as well, skilled resources. Pakistan is facing digital skills emergency as we speak. There are more than 100,000 openings in IT companies right now. 10% employability rate of the graduates that are coming out of universities. The two quick solutions to the skill development dilemma, and there are big elements to that. One, 4.5 lakh graduates university से आ रहे हैं. 25,000 IT graduates हैं. And then 45 to 50,000 if you include the engineering graduates as well. But there are 400,000 graduates on an annual basis that are coming from non-tech backgrounds. They do not have the opportunity. IT industry is full of opportunities. If we can channel those graduates into IT industry, we can create jobs in a lot of ways. The second solution that I will talk about from the skills perspective is the root cause lies with the universities. So we have to seriously think about the faculty development and faculty induction and faculty promotion criteria. जब तक हम papers की basis पे उनको promote करते रहेंगे, तब तक we will always talk about the skills shortage. The second lever of the problem on the tech growth is the policy side.
We all know about it. It's our pain. I will not spend too much time. Policy enablement comes at a bigger thing. Apart from the forex retention and is tarah ki policies, one big root cause of our policy dilemma is that regulatory regime that we are in was actually developed in Ayub Khan's era in 1976, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जब आए थे, और हम अभी तक उसी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, जबकि हमारी पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर नॉलेज इकोनॉमी हो गया है. सो नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म्स नीड टू बी देयर, एंड देन वी नीड टू इनकरेज लोकल प्रोजेक्ट्स, एंड आई विल कंक्लूड ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच हिरा. एकेडमिक रिफॉर्म्स अगर मैं समराइज करूँ, दैट्स व्हाट यू सेड. सर आप उधर से देखें, एक थीम डेवलप हो रहा है, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू स्पीक ऑन दैट. इज़ we need to help our youth acquire relevant skills, right? So employability is a serious issue. Again, I'll come back to the same point that we all need to come together and solve this problem. Very good point made by Hera that we need to work on the people who are actually imparting this knowledge. We need to work with them and make sure that they understand the latest skills, and then those skills are then transferred to the youth so that this employability is there. One more point which I want to mention before I close. You are talking about creativity and creative people. We need to start giving value to our creative people. And how we give value, there's only one way to give value to a creative person: pay for their creativity. थैंक यू वेरी मच. और मैं अगर समराइज़ करूँ आप चारों के मेजर जो सोल्यूशन प्रपोज्ड हैं कि बेटर पैकेजेस, सॉफ्ट स्किल्स, एकेडमिक रिफॉर्म्स और जो फैकल्टी डेवलपमेंट आप कह लें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना. थैंक यू वेरी मच दिस टीम पैनलिस्ट. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विद दिस वी कम टू ए कंक्लूजन. क्रिएटिव इकोनॉमी को फिर अगर मैं समराइज़ करूँ, आप सब लोगों के जिनके बच्चे हैं और वो यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप मेरे से इस चीज़ पे एग्री करेंगे अगर आप नोटिस करें कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और किन हीरोज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई बिलीव कि अगर वो डॉक्टर अमजद साकिब को जाने और इन जैसे नेशनल हीरोज़ को जाने, तो शायद पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन सकता है और हम अपने मुल्क को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर अमजद साकिब साहब. थैंक यू जी. और अब मैं चाहूँगी कि कवल प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को हम मेंटोर्स दें ताकि उन्हें याद रहे कि आज के इस इवेंट का वो हिस्सा बने थे. वैसे सर, कॉन्ट्रोडिक्टरी टू योर रिमार्क, आजकल के बच्चे अच्छा कंटेंट भी देखते हैं. सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते. Okay, so we have Azhar Nawaz Saab, CIO Engro. Mehzad Sahar Sahab. Ms. Hera Zainab.